Hello everyone. So today we will be talking about how we can create a format of legal notice for eviction of tenant. तो सबसे पहले ये बात जाननी ज़रूरी है कि अगर कोई भी लैंडलॉर्ड किसी टेनेंट को लीगल नोटिस देकर एविक्ट करना चाहता है तो इंडियन लॉ के हिसाब से उसकी कोई मजबूत वजह होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रेंट अग्रीमेंट को ब्रीच करके अपनी मर्जी के हिसाब से कभी भी एविक्ट नोटिस भेज दिया और बोल दिया कि घर खाली करो। सो इन अदर वर्ड्स द फॉर्मेट ऑफ लीगल नोटिस फॉर eviction of tenant should be legitimate and valid. Hence, first we will get familiarized with what are the reasons under which an NRI landlord or any landlord प्रॉपर्टी ओनर को एक एविक्शन लॉसूट फाइल कर सकते हैं। सो एडिशनली एवरी स्टेट हैज़ देयर ओन सेट ऑफ लॉज, मतलब हर स्टेट के पास अपने खुद के प्रॉपर्टी रिलेटेड लॉज होते हैं उनकी कंडीशंस को लेकर, बट मेनली देर आर 8 पॉइंट्स और 8 रीजंस अंडर विच लॉ सूट कैन बी फाइल्ड. These are firstly, the renter has failed to pay the agreed upon monthly rent for a period of more than 15 days after the due date. मतलब लास्ट डेट या डेडलाइन के 15 दिन बाद तक रेंटर ने मंथली रेंट नहीं पे किया है. Second is without the landlord's permission or a documented application, the renter rented the residence to someone else. जैसे किसी ने अपने मकान मालिक की जानकारी के बाहर किसी और को वो प्रॉपर्टी या फ्लैट रेंट पर दे दिया. Thirdly, the renter has been using the rental property in India for illegal activities or for some other reason not specified in the lease agreement. For example, prostitution या फिर consumption of drugs. And fourth reason says any behavior on the part of the tenant that has resulted in a decrease in the property's value or usability. For instance, जो tenant है अगर उन्होंने किसी neighbor को offend करा हो या अगर landlord को tenant के बारे में कोई भी complaint मिली हो, which cannot be overlooked. And fifth is for unclear reasons. The renter has purposefully contested the landlord's title to the rented property, जैसे कि denying the landlord's title. Sixth is the landlord needs his property for his own business or for a family member. Seventh is the landlord needs his property for upkeep and remodeling, which is impossible to do otherwise until the residence is empty. And finally, eighth is the landlord wants to construct a new structure which necessitates the demolition of the old one. तो ये 8 reasons थे which can help anyone, especially NRI landlords, to create a format of legal notice of eviction of tenant. Now we will discuss some essential points which a landlord should focus on before renting anyone their property. Now when an NRI rents out his home in India, there are particular tenant rights to be aware of. These rights are emphasized in the Rent Control Act of 1948, which was enacted by the Indian government. अब जो पॉइंट्स हम आगे डिस्कस करेंगे वो एक लैंडलॉर्ड को रेंट एग्रीमेंट बनाने से पहले ध्यान में रखने चाहिए. सो फर्स्टली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ established that a landlord in India cannot order his or her tenant to quit the property for a minimum of 5 years provided the tenant pays rent on time, unless the landlord has a genuine and strong necessity for the property for his or her use. मतलब 5 साल मिनिमम अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर तो देनी है unless there are some other reasons. And other than that, it is critical that you contact an Indian property lawyer to draft the rent agreement, which will include the provisions about the use of the property, the amount of rent that must be paid, and the conditions for terminating the rent agreement among other things. मतलब एक प्रॉपर्टी अटर्नी को के पास उतना एक्सपीरियंस होगा ही कि वो आपकी प्रॉपर्टी को एक्यूरेट प्राइस और वैल्यू दे सकता है. The lease should be for only 11 months and should include a condition for optional renewal. ये पॉइंट इसलिए ज़रूरी है ताकि इन फ्यूचर इफ़ यू वांट टू क्रिएट द फॉर्मेट ऑफ लीगल नोटिस फॉर एविक्शन तो आपके लीज में ऑलरेडी इसके रेफरेंस में एक क्लॉज हो. And under the rental regulations of the state where the residence is
located, the reasons for asking the renter to evict the property must be lawful and justified. इसके अंदर वो सारे रीजंस आएंगे जो हमने अभी डिस्कस करे हैं, द 8 reasons. The landlord should not remove the tenant without first serving him or her with a valid notice. इस पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि लैंडलॉर्ड को landlord should know how to draft the format of eviction notice, and the landlord should not be involved in any unethical and disconnect services such as water or electricity, changing the locks on the house, tossing away the tenant's personal possessions, and so on. So all of these are criminal offenses, and the tenant has the right to denounce you to police, resulting in charges being filed against you. तो इसके अंदर लैंडलॉर्ड का ही लॉस होगा. एंड लास्टली इट इज़ क्रिटिकल टू कंडक्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव बैकग्राउंड चेक ऑन द टेनेंट before renting out your home. It is also required that you submit the information along with your tenant's identity proof to the local police station so that they can check your tenant's background. अब हम लॉज ऑफ एविक्शन एंड रेंट से थोड़े फेमिलियर हो गए हैं, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू हाउ द प्रोसेस ऑफ एविक्शन एक्चुअली वर्क्स. तो सबसे पहले लीज अग्रीमेंट साइन होगा. इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेंटल अग्रीमेंट इन विच both the owner and the tenant mutually decide to give and stay in the property respectively. और अगर इसके बाद यानी रेंट अग्रीमेंट का टेन्योर ख़त्म होने से पहले कोई प्रॉब्लम अराइज होती है, जैसे कि टेनेंट ने रेंट नहीं पे करा विद टाइम या रेंट लीज वायलेट हो गई है फ्रॉम टेनेंट साइड, तो इस स्टेप में आकर लैंडलॉर्ड शुड फर्स्ट warn the tenant about the problem. It is advisable that the landlord must first tries to communicate the problem by himself, because then maybe जो आपका रेंटर है वो आपकी प्रॉब्लम समझे, जिससे दोनों पार्टीज का काफ़ी टाइम बचेगा. Now if the problem is still not dissolved, then you should definitely draft a format of legal notice for eviction of tenant. Now this legal notice will again give the tenant some amount of days in which he can dissolve the issue. इससे अगले step में the official complaint is filed in the court. In this, the court sets a date in which both parties should come. Now, the tenant receives a summons. The tenant still has an option. वो अपनी साइड भी जज के सामने ला सकता है on the set court date. So now when the day has finally arrived to go to the court, the judge will make a decision. अब इसके अंदर दो तरह की judgments आ सकती है for obvious reasons. The first is that the tenant might win. Now, if the tenant wins, then the landlord has to pay the tenant's court fees or filing fees and also the tenant's attorney's fees. But if as a landlord, if you win, then the judge will issue a court order, जिसको formally warrant of eviction या writ of restitution भी कहते हैं, और ये वारंट जज टेनेंट को इशू करेगा, जिसमें या तो टेनेंट खुद वॉलंटरली आपकी प्रॉपर्टी छोड़ सकता है, और अगर वॉलंटरली नहीं कर रहा तो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर खुद आकर आपकी प्रॉपर्टी खाली करेंगे. Along with this, the tenant will pay the landlord, that is you, based on lease agreement like court filing fees, attorney fees, unpaid rent या और कोई damages या फिर penalties as monetary compensation. No, in order to create a format of legal notice for eviction of tenant, आप लोगों को उस नोटिस में 5 चीज़ों के आंसर्स लिखने होंगे. अगर हम सिंपल तरीके से फॉर्मेट ऑफ लीगल नोटिस फॉर एविक्शन ऑफ टेनेंट को देखें तो, so first is to whom does this apply. Now this includes name and address of the tenant, name and address of the landlord. Second question is, why is the eviction occurring? This includes failure of rent payment on time, violation of rent agreement, month to month tenancy expiry, and expiry of lease, that is holdover tenant. Third question is, where is the eviction taking place, which means the address or premise. Fourth question is, how can the problem be fixed? This involves the name and date of the original rent agreement,
and a reference to the lease about how the tenant can accomplish their promise. And lastly, the fifth question is notice date, which is the date on which the notice will take its effect or deadline. Therefore, with answering these five basic questions like who, wow, where, what, and when, you can simply create a format of legal notice for eviction of tenant. Thank you.